So good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. Now in today's class we are going to talk about borrowings by the states. Am I audible and visible to everyone? I haven't yet opened the window. Am I visible to everyone? So let's get started now. Just a minute. Borrowings by state is the topic related to the discussion that we were having related to Finance Commission. Just a minute, let me open the class. Borrowings by the states. Give the heading please. Okay, so let's get started. Good evening everyone. Is everybody in? Shall we start? Please write down. Conventionally, the state's borrowing used to be the state's borrowing. Total जो overall states की borrowing होती थी. Conventionally, the state's borrowing. State apostrophe s. State's borrowing used to be capped at 3%. ठीक है, ओवरऑल जो स्टेट की बोरिंग होती थी ना वो 3% के अराउंड होती थी कन्वेंशनली. लेकिन this year conventionally the state's borrowing used to be Conventionally, the state's borrowing used to be 3%, okay, of their gross state domestic product. Okay, gross state domestic product. Done. But this year, the center has allowed state governments, to borrow 75% of their annual market borrowing limit. But this year the center has allowed the state governments to borrow 75% of their annual market borrowing limit. 75% of their annual market borrowing limit of 4%. Conventionally, the state's borrowing used to be 3% of their respective GSDP, respective gross state domestic product. But this year, the center has allowed the state governments to borrow 75% of their annual market borrowing limit of 4%. उनको ये बोला गया कि आप अपने जीडीपी का 4% बोरो कर सकते हो. ठीक है, 4% of their respective GSDP in the first 9 months of current fiscal. In the first 9 months, front loading बोलते हैं इसको. ठीक है, in the first 9 months of current fiscal. In the first 9 months of current fiscal, ब्रैकेट में लिखो फ्रंट लोडिंग. फ्रंट लोडिंग मतलब पहले साल में जब मेजर पार्ट ऑफ बोरोइंग करने दिया जाए तो उसको फ्रंट लोडिंग बोलते हैं.
ये क्लियर हो रहा है सबको हम क्या पढ़ रहे हैं? जो हमने कल समझा था ना कि रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा होता चला जा रहा है, उसी का फॉलो अप वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट. Clear as this year, the center has allowed the states to borrow 75% of their annual market borrowing limit of 4%. स्टेट्स के ऊपर बोरिंग लिमिट कितनी है? पहले 3% होती थी, लेकिन इस बार 4% कर दी गई है. ठीक है, स्टेट्स को ये कह दिया गया कि तुम बोरो कर लो. ठीक है, the center has also mandated the center, after full stop, the center has also mandated the center has also mandated the states the center has also mandated the states to spend 50% of 4%, to spend 50 basis points, 50 bps, यानी कि 0.5%. ठीक है, 50 basis points, 0.5% of the 4% borrowing of the 4% unconditional market borrowing limit for the current fiscal year on incremental capital expenditure. ठीक है, the center has also mandated that the states must spend 0.5% of 4% अनकंडीशनल मार्केट बोरोइंग लिमिट. जो 4% स्टेट्स बोरो करेंगी ना, उसमें से उनको बोला जा रहा है कम से कम आधा % तो तुम कैपिटल पे खर्च करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे. The center has also mandated that the states must spend 50 basis points of the 4% unconditional market borrowing limit for okay, so this is their 4% of their unconditional market borrowing limit for the current fiscal on incremental capital expenditure to improve the quality of spending. Done? So the center on incremental capital expenditure, नया capital expenditure उनको करने को कहा जा रहा है. क्लियर?
ये थोड़ा सा पता होना चाहिए था। और दूसरा, एक दो पॉइंट्स और हैं इससे रिलेटेड, प्लीज राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू द ग्लाइड पाथ सजेस्टेड बाय द 15th फिनेंस अकॉर्डिंग टू द ग्लाइड पाथ सजेस्टेड बाय एनके सिंह पैनल, जो ग्लाइड पाथ की हमने कल बात करी थी ना, लिख लिया? अकॉर्डिंग टू द ग्लाइड पाथ according to the glide path suggested by the Finance Commission, by the NK Singh panel, states can borrow ये 15th फाइनेंस कमीशन ने इसी बात को दोबारा से रीआइटरेट कर दिया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्लाइड पाथ सजेस्टेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन, glide path for each state, glide paths plural, for each state to reduce the overall debt to GDP ratio of states, to reduce the overall debt DEBT कर्जा debt to GDP ratio of states to 20%। तो एनके सिंह पैनल ने क्या कहा था कि जो ओवरऑल स्टेट्स का कर्जा है उनके जीडीपी का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पब्लिक डेट हमने कल बॉटल में देखा था, क्लियर? ओके, सो debt the states were told to reduce the debt, the glide paths according to the glide path suggested by NK Singh panel, comma, the glide paths for each state to reduce the overall debt to GDP ratio, to reduce the overall debt to GDP ratio, okay, debt to GDP ratio to 20% by 2024-25। ओके, तो ये कहा गया था, समझ में आ गया?
डन है सभी के लिए? तो ये था थोड़ा बहुत स्टेट्स पे। अब आज ही की क्लास में वी विल बी डीलिंग विद स्टेट्स के ऊपर एक बार दोबारा से आएंगे, बट नॉट फॉर नाउ इट इज़ डन मोर और लेस, ठीक है। स्टेट्स के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है डेट ग्लाइड पाथ वाला स्टेट्स के लिए, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट FDI लिमिट्स। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट को सरकार ने इंक्रीज़ किया था, ठीक है। तो उसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें और थी जो तुम्हें स्टेट बोरोइंग से रिलेटेड पढ़ानी थी। स्टेट्स को सेंटर ने क्या किया है, टू नेक्स्ट पैराग्राफ, टू इंक्रीज द स्टेट्स कैपेसिटी टू बोरो, ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। टू इंक्रीज द स्टेट्स कैपेसिटी टू बोरो, कॉमा, द सेंटर हैज अलाउड देम टू एनहांस देयर फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम to increase the state's capacity to borrow, states were allowed to enhance their fiscal deficit from 3% to 5%. ओके, 3% to 5%। अब ये 5% वाली स्टोरी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो क्यों किया गया, स्टेट्स को दो ऑप्शन दिए गए थे। स्टेट्स वर गिवन टू ऑप्शंस, ठीक है। उस चीज को स्टडी कर लेते हैं, रेवेन्यू शॉर्टफॉल को, टू मीट द GST रेवेन्यू शॉर्टफॉल। States were given two options. What were these two options? ये पढ़ा था ना न्यूज़पेपर में, नवंबर दिसंबर में ये न्यूज़ में आ रहा था, राइट। ईदर द सेंटर विल बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट्स, याद आया कुछ, राइट। अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में यही सब न्यूज़ में चल रहा था, जो कि काफ़ी जिस पे ये भी हुआ था कि सेंटर ने स्टेट्स को कहा कि हाँ, हम कॉम्पेंसेशन इस बार नहीं दे पाएंगे और आप इसको बोरो कर लो, राइट। राइट, सो लिख लो इसको एक बार। द सेंटर हैड एक्नॉलेज्ड दैट द सेंटर हैड एक्नॉलेज्ड दैट states are likely to face a GST revenue gap of rupees 3 lakh crore. During 2020-21. Clear? Now, states given the two option. The first option is, states were given the two options. The first option was providing a special window to states. The first option was providing a special window to states in consultation with RBI. The first option was providing a special option to states in consultation with RBI.
The first option was providing a special window to states in consultation with RBI for borrowing rupees 97,000 crore at a reasonable interest rate. At a reasonable rate of interest. ठीक है. The second option before the states is to borrow, अच्छा, in consultation with RBI for borrowing rupees 97,000 crore. ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया. तो first option was providing a special window to states in consultation with RBI for borrowing rupees 97,000 crore at a reasonable interest rate. At a reasonable interest rate. Clear? At a reasonable interest rate. The second option before the states is to borrow the entire 2,35,000 crore shortfall under the special window created by RBI. दोनों वे से बोरो करना है, ठीक है. या तो इधर बोरो कर लो या उधर बोरो कर लो. फर्क क्या है? 2,35,000 बोरो करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देगी. 97,000 करोड़ गारंटी लोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी नहीं देगी. मतलब समझ में आया? तो लिमिट को जो इंक्रीज किया गया है 3 to 5% में, वो 5% इंक्रीज तभी होगी जब स्टेट्स खुद से बोरो कर रही हैं. अगर स्टेट्स बोरो नहीं करती तो फिर लिमिट कम हो जाती है, राइट? States given two options. The first option is to provide a special window to states in consultation with RBI, right? तो उस पर कुछ फर्क नहीं है ज्यादा. In consultation with RBI for borrowing rupees 97,000 crore at a reasonable rate of interest. The second option before the states was to borrow the entire rupees 2,35,000 crores. Borrow the entire rupees 2,35,000 crores. जो हमने ये कॉम्पेंसेशन की बात करी थी ना 14% इंक्रीमेंट वाली, ये वो वाली कॉम्पेंसेशन है, ठीक है. नाउ द इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग, द इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग can be repaid from the cess collection. The interest on the borrowing can be repaid from the cess collection. CESS. Clear? क्लियर? तो ये छोटी सी न्यूज़ थी. अब एफडीआई वाली न्यूज़ की तरफ चलते हैं. क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स द एफडीआई रिलेटेड इशू नाउ. एफडीआई एक ब्रॉड टाइटल दे लो. एफडीआई लिमिट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया. एफडीआई लिमिट्स
in different sectors in India. This means that central government will pay the cess, yes, interest. Okay, yes. Anuj, okay. Now, FDI limits in different sectors in India. First of all, FDI limit in insurance. Point number one, FDI limit in insurance increased from 49% to 74%. FDI limit in insurance increased from 49% to 74%. ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स भी हैं, नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, राइट? तो फॉर दिस पर्पस इंश्योरेंस एक्ट 1938 हैज़ बीन अमेंडेड. For this purpose, Insurance Act 1938 has been amended. For this purpose, FDI, for increasing the FDI limit in insurance sector from 49% to 74%, Insurance Act 1938 has been amended. Okay, before this, in 2015, the government hiked the FDI cap. Before this, in 2015, the government hiked the FDI cap in insurance sector from 26% to 49%. Before this, the government hiked the FDI cap in the insurance sector from 26% to 49%. 2015 में इससे पहले 26% FDI हुआ करती थी, उसको 49% किया गया. ठीक है. The government had earlier, दो, अब अगला सेंटेंस है. अच्छा लिख लो जिन्होंने पहले नहीं लिखा. Before this, in 2015, the government hiked the FDI cap in insurance sector from 26% to 49%. The government had earlier allowed 100% FDI in insurance intermediaries. बिचौलिए जो होते हैं ना इंश्योरेंस में, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने पहले 100% FDI अलाउ कर रखी है. इंश्योरेंस कंपनीज में नहीं. इंश्योरेंस कंपनीज की बात नहीं हो रही, ठीक है. इंटरमीडियरीज में 100%. इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकरिंग फर्म्स एटसेट्रा. क्लियर? लिख लिया? अब फटाफट से लिखते जाओ. ये FDI वाला ये तो ठीक है. नाउ FDI limit in defense production. $74 under, yes, like Policy Bazaar. Very nice. Okay. FDI limit in defense production. Heading 2. Point number 2, heading 2, FDI limit in defense production. FDI limit in defense production has been increased to 74% under automatic route.
FDI limit in defense production has been increased to 74% from under automatic route. ठीक है, under automatic route. In the same paragraph you have to write, अच्छा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, FDI limit in defense production has been increased to 74% under automatic route. Full stop. Further, the government has inserted, further, the government has inserted National Security Clause. स्क्रीन पे देखो, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज. Okay, to reserve the right to review any foreign investment. To reserve the right to review any foreign investment. To reserve the right to review any foreign investment in defense sector that may affect national security. Further, the government has inserted National Security Clause under which the government reserves the right to review any foreign investment in defense sector that affects or may affect national security. Written? Written, everyone? Further, the government has inserted National Security Clause under which the government reserves the right to review any foreign investment in the defense sector that affects or may affect national security. Full stop. Hence, the FDI in defense sector may now fall in three categories. Hence, the FDI in defense sector may now fall in three categories. Hence, the FDI in defense sector may now fall in three categories. Hence, the FDI in defense sector may now fall in three categories. नीचे लिखो point number 1, through automatic route up to 49%. ठीक है, through automatic route up to 49%. थ्रू ऑटोमेटिक रूट अप टू 49%. मैंने एक चीज़ गलत करवा दी तुमसे, 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट लिखा है ना, उसको लिख लो फ्रॉम एग्जिस्टिंग 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट. एफडीआई लिमिट को 74% इंक्रीज किया गया है, लेकिन अप्रूवल के अंडर 49% तक ऑटोमेटिकली आ सकती है. ठीक है, हैज बीन रेज टू 74%. अंडर अप्रूवल रूट करना है तो ऐसे कर लो, या तो ये लिख लो अंडर अप्रूवल रूट. 74% तक एफडीआई अप्रूवल रूट के अंडर आ सकती है, लेकिन 0 to 49% ऑटोमेटिकली कोई भी कंपनी आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी और आरबीआई को 30 दिन के अंदर अंदर
1 महीने के अंदर अंदर बता देगी कि हम इंडिया में आए हैं, हमने इंडिया में 400 करोड़ या 2000 या 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अप्रूवल रूट में पूछना पड़ता है कि हम इंडिया में चाइना से आ रहे हैं, तो हम इंडिया में कंपनी लगाएं, फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं। डन। FDI limit in defense production has been raised to 74% from existing 49% under automatic route. This is the first line. Okay. Hence, the sentence that we were writing, hence, comma, FDI in defense sector may now fall in 3 categories. Number 1, through automatic route up to 49%. 2, with prior scrutiny from national security angle between 50 and 74%. 2, with prior scrutiny from the national security perspective. With prior, defense ministry से, commerce ministry से, with prior scrutiny from national security angle.